everybody, how are you? I am Dr. Saloni Nandan. In this video, I will discuss with you how to tackle IELTS writing task. I will explain everything through some sample questions and I will also give some strategies to answer writing task. So keep watching and happy learning. What is there in the writing task? In the writing task, total 1 hour is allotted to complete 2 tasks. In task 1, you have to write a letter to request for an information or to explain a situation in minimum 150 words. So I suggest you spend 20 minutes here. In task 2, you have a short essay on a given topic or a point of view, an argument or a problem which you have to write in at least 250 words. So I suggest you spend 40 minutes here. Now let's go to some general tips for writing task. First tip is read your question twice. Yes, twice. Question को 2 बार पढ़ें. It is very important to understand how many parts are there in your question, as you have to answer all the parts of a question. You may feel that you are wasting time on planning, but it will save a lot of your time later when you will start writing. So plan first and write later. पहले planning करें, फिर लिखें. आपको लगेगा कि आप planning में बहुत time waste कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. आप सारे पार्ट्स पहले समझ लें, फिर लिखना चालू करें. This question is about environmental problems, what they are. What are the environmental problems on global scale and what environmental problems are there on national scale. Here you have to discuss how environmental problems on global scale and national scale should be solved, and then you have to conclude with your opinion whether they can be solved on global or national level. So question को parts को ध्यान से पढ़ें. जैसे इस question में दिया गया है कि environmental problems को global scale पे या national scale पे कैसे solve करना है. So पहले उसके बारे में लिखें, फिर conclusion में अपनी opinion दें. Keep reading your task again and again while you are answering the question to clear your doubts about the topic. Read the topic before writing the intro, then read it again before writing the body, and then read it again before writing the conclusion. So question को बार-बार पढ़ें, introduction लिखने से पहले भी पढ़ें, body लिखने से पहले भी पढ़ें और कंक्लूजन लिखने से पहले भी क्वेश्चन को बार-बार पढ़ें. Plan your writing. Before you start writing, plan what you are going to write. Make sure you are going to answer the question rather than writing something irrelevant or too general. There isn't time for this in the test. So look at the question again and again before intro, before body and before conclusion. राइटिंग को प्लान करें. इररिलेवेंट राइटिंग के लिए आपके पास समय नहीं है. लुक एट दिस टास्क. हियर यू हैव टू डिस्कस बोथ द ओपिनियंस. फर्स्ट टॉक अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज, देयर रीजंस ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड, एंड देन गिव योर ओपिनियन बाय स्पेंडिंग नॉट जस्ट मनी बट मोर मनी देन दैट इज बीइंग स्पेंट now on protecting such species is important and not. If your opinion is not to spend more money on protecting them, then you have to write why spending money is good, but what positive outcomes will be there if more money is not spent to protect such endangered species. So पहले अपने टास्क को देखिए. इस टास्क को देखिए. इसमें ये डिस्कस करना है, आपको अपनी दोनों ओपिनियंस देनी है इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट ऑल्सो. फर्स्ट आपको बताना है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है,
फिर आपको ये बताना है कि कैसे ज्यादा पैसे, जितने पैसे अभी स्पेंड हो रहे हैं उससे और ज्यादा पैसे स्पेंड करके क्या फायदे होंगे। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि ज्यादा पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है तो वो भी अपनी ओपिनियन में लिखें और ये बताएं कि पॉजिटिव आउटकम क्या होगा उसका जब आप ज्यादा पैसे इन एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेंड नहीं करेंगे। तो while writing, keep your handwriting legible. The other person should be able to read what you have written. All the words should be written in such a manner that they can be read properly, otherwise they will be marked wrong. So अपनी हैंडराइटिंग पे बहुत ध्यान दें। अगर आपकी हैंडराइटिंग से ऐसे वर्ड्स हैं जो पढ़े नहीं जा सकते तो उनको रॉन्ग मार्क कर दिया जाएगा। Remember to include all the information you have been asked to write about. All the points that you need to cover in your answer. Describe each and every point that has been asked. If it is a diagram, describe every part of it. If it is a table, describe each row and column. So हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्क्राइब करें पर वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर। अगर डायग्राम है तो उसके हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करें, अगर टेबल है तो उसके हर एक रो एंड कॉलम को डिस्क्राइब करें, कोई भी पॉइंट भूले नहीं और छोड़े भी नहीं। It is very important to not to exceed the word limit. It is important to keep in mind the word limit required for each task. Remember, task 1 has word limit of 150 words and task 2 has word limit of 250 words. So stick to that. Don't write stories. There is no place for stories in your answers. Answers should be relevant to your question, and even quotes, examples or supporting arguments should not be very long but should be impersonal and appropriate to the topic. Answer relevant होने चाहिए, impersonal होने चाहिए और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आंसर्स में स्टोरीज बिल्कुल भी ना लिखें। Write your answers in proper paragraphs with an introduction, body and a conclusion to the task. Link the paragraphs and the points clearly with suitable words. The paragraphs should not look unconnected or freestanding, but there should be coherence, unity between them. For that, use linking words and phrases and keep the topic in mind to maintain a flow and relationship between the paragraphs. Paragraphs में अपने आंसर को लिखें। पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए। लिंकिंग फ्रेजेस और वर्ड्स यूज करें पैराग्राफ्स को ज्वाइन करने के लिए। ऐसा ना लगे कि पैराग्राफ कहीं भी से उठाकर ऐसे ही आपस में ज्वाइंट नहीं है। सो पैराग्राफ्स में एक यूनिटी होनी चाहिए एंड एक फ्लो होना चाहिए। सो कीप इन माइंड that you may use some linking words to keep a flow between the paragraphs. Make sure you use tenses accurately and appropriately to answer the questions. Suppose you start writing in past tense, then don't switch to present tense in the body of the task and then to future tense in the conclusion. Stick to one tense that is appropriate for the task and continue with the same task throughout the same tense throughout the task. So एक ही tense में पूरा task लिखें। ऐसा ना करें कि पहले future tense में आपने introduction लिख दिया, past tense में body और present tense में conclusion. Stick to one tense throughout the answer. Please focus on grammatical and spelling mistakes. Correct spellings, punctuations and grammar will definitely get you good scores as they will help you form correct sentences. So spellings, punctuations और grammar का बहुत ध्यान रखें क्योंकि आपके स्कोर इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। Avoid using the same words again and again or those words that have been given in the instructions. Use a range of new words vocabulary. Use a range of vocabulary and structures to demonstrate your knowledge of English.
सेम वर्ड्स जो इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हैं वो यूज मत करें, सेम वर्ड्स बार बार यूज ना करें। आप अपनी इंग्लिश की नॉलेज दिखाएं वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी और वर्ड्स यूज करके। In this task, don't write. I explain the problem that there is too much noise in your flat. For second paragraph, don't write. I suggest a solution could be so and so. For the last paragraph, don't use the same words as given in the instructions of the task. For example, if the situation does not improve, I will take action. Instead, you can write, if the same situation continues, then I'll have to report to the local police about it. So you have to change the words that have been given in the instructions. Instruction में दिए गए words को अपने words में change करके ही आपको लिखना चाहिए. Finish both tasks in 60 minutes. Since task 2 is longer and has to be finished in 250 words, devote 40 minutes to it and start writing it first. I suggest that you should have some opening and concluding phrases in your mind to complete the task in time. दोनों टास्क को 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है और टास्क 2 में 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले टास्क 2 लिखें और कुछ बिगनिंग के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए और कंक्लूजन के लिए फ्रेजेस पहले से ही अपने दिमाग में सोच कर रखें. Use language and style that is suitable for the task. Write your whole task in the same style. For letters, keep the style and language formal or informal depending upon the type of the letter. Write in a polite style even if you are complaining about something. End the letter in a suitable way. For task 2, keep the style impersonal and language formal as task 2 is always formal. Task 2 हरदम formal होता है तो language formal रखें और style impersonal, और task 1 के लिए language formal या informal letter के type पर depend करता है. अगर आप complain कर रहे हैं किसी बात के लिए तो भी अपना style, अपनी language polite रखें और letter को appropriately end करें. So use language and style that is suitable for the task. Don't use idioms for formal writing as idioms are perfect for speaking and not for formal writing. Formal writing में idioms का use ना करें. Like you say in a nutshell, don't say that because idioms spoken English के लिए अच्छे होते हैं पर formal writing में idioms की जगह नहीं होती है. Also avoid contractions like won't, can't, don't, etc. Write will not instead of won't, cannot for can't, do not for don't. Contractions use ना करें. Will not लिखें won't की जगह, do not लिखें don't की जगह और cannot लिखें can't की जगह. Short forms contractions का use avoid करें. Well, that's all for today. Have a little bit of dedication and confidence and I'm sure you will be able to crack IELTS writing test. All the best and bye for now. Take care.